Hello everyone, ମୁଁ ରଞ୍ଜିତ इंडियन इकोनॉमी ओडिशा इकोनॉमी एंड बजेट रो 20 एमसीक्यूज नहीं आसी एई वीडियो रे कंप्लीट देखंतु एथरे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन भी अछि ता सहित स्टैटिक भी अछि। फर्स्ट क्वेश्चन इन द ओडिशा बजेट 2026-27 मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हैज रिसीव्ड एन एलोकेशन ऑफ यार करेक्ट आंसर अब 1161 crore 1161 crore Which scheme under Odisha budget 2026-27 received 357 crore to ensure universal access to electricity in rural hamlets? मुख्यमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बिजू ग्राम ज्योति योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. आंसर विल बी बिजू ग्राम ज्योति योजना. hamlets माने वेरी स्मॉल विलेजेस माने जो माने पीडीएफ केवल पढ़िबे से मानक पई मते एमती टाइप करिया पड़ला वेरी स्मॉल जोठी 100 रु भी कम लोक थिबे कहले भी किछि भूल हबनी ताको हमें रूरल hamlets बोली कहउछे. क्लियर. नेक्स्ट In the Union Budget 2026-27, which major government initiative was announced to transform India's sports ecosystem through a long-term mission mode approach? Fit India 2.0 mission, Bharat Sports Development Yojana, National Sports Excellence Scheme, Khelo India mission. Answer will be Khelo India mission. 500 crore allocated to promotion of sports goods manufacturing. 1133 crore increase in budget allocation for Ministry of Youth Affairs and Sports. Under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBGRAMG यार फुल फॉर्म भी मन रखिए एक्ट 2025 रूरल हाउसहोल्ड्स आर guaranteed how many days of wage employment in a financial year? 100, 120, 125, 130. 1 second ए जगह लास्ट लाइन रो किछि आवश्यक नाही. आई डोंट थिंक यार किछि दरकार अछि. ठीक अछि. नेक्स्ट तो यार आंसर कोन हबो? आंसर विल बी 125 days. मनरेगा अंडर रे कौन थिला 100 दिन पर्यंत काम दिया जाउतला एबे 125 दिन पर्यंत दिया जिवो अंडर VBG रामजी. Which among the following acts empowered Legislative Council in India to ask questions to the executive and discuss budgetary matters? Which acts empowered Legislative Council in India to ask questions to the executive and discuss budgetary matters? Answer will be India Council Act 1892. India Council Act 1892. Next. Which scheme was introduced in Odisha budget to create a saving instrument of 20,000 in the name of a girl child from an economically weaker family? गोटे क्वेश्चन आसपे मन रखिथे डाल खाई आगे ऑलरेडी क्वेश्चन आसी भी सारी आसी जाई भी पारे अगेन. यार करेक्ट आंसर वो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना. ग्रेजुएशन कंप्लीट पर केते मिलिबो 1,01,000 जन्म हला बेलगु ता ना रे रखाबो 20,000 जेतले ग्रेजुएशन कंप्लीट हबो 1,01,000 टंका मिलिबो. In the Union Budget 2026-27, the government announced the development of dedicated rare earth corridors in states such as Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu with what primary objective? To expand agriculture export zones for marine products, to establish new defense industrial corridors, to boost domestic manufacturing of rare earth magnets. Answer will be option C. Rare earth magnet ru mane padla economic survey of Odisha. या रिलेटेड किछि क्वेश्चन ए पर्टिकुलर मॉक रे नहीं माने वीडियो रे नहीं बट आपन को एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो. Which of the following draft rules was introduced in 2026 to provide social security benefit to workers and employee in Odisha? या भीतर केउटा आसिला कहा मान केउ मानक पई वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दबो
आंसर हम ओडिशा कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी रूल्स 2026 ओडिशा कोड ऑन सोशल सिक्यूरिटी रूल्स 2026 एथरे बहुत गुडे बेनिफिट्स अछि केउ मानक पई अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स ठीक अछि Which government scheme introduced in 2001 aimed to generate wage employment opportunities for the rural poor? National Rural Employment Program, Rural Landless Employment Guarantee Program, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्वरोजगार योजना बाय द वे ए क्वेश्चन देखि जदि टिके ऑड लागुची देन ऑड लागिबा भी स्वाभाविक आपण जदि ऑफलाइन क्वेश्चंस आगु देखि चंती ताहले आपण को ए क्वेश्चन सब ऑड लागि पारे ऑनलाइन रे आपण को किछि भी क्वेश्चन पचारि पारे लाइक एबे जेमते आपण को मो दउची यार करेक्ट आंसर हबो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना to provide supplementary wage employment, improve nutritional level, and create durable community and economic assets in rural areas. The scheme was unique because wages were paid as a combo of cash and food grains. Seasonal unemployment occurs mainly because certain economic activities provide employment only during particular seasons of the year. Which sector is most affected by this type of unemployment? ये बहुत ही common question. Very common question. The correct answer of agriculture. Answer will be agriculture. कौन पे ना तांको पाखरे whole year काम करिया को न थाए सेटा ही जगह लिखा जाइछि the agriculture sector is the most heavily affected by seasonal unemployment because farming activities rely on specific biological cycles, weather condition and monsoons. Agricultural laborers experience periods of intense work during sowing, transplanting and harvesting, followed by months of no work during the off season. अगर काम स्टार्ट हुए कोठु स्टार्ट हुए गछ माने मंजी पकेवा तापरे ताकू जगिबा तापरे ताकू क्रॉप हे गला परे ताकू हार्वेस्ट करिबा बस सेति पर्यंत से जदी काम 6 मंथ रे सरू जे आ 6 मंथ काम मिलु नै बुझी होची नेक्स्ट Which of the following is a government policy instrument used to protect farmers' income? Income tax reduction, minimum support price, import duty reduction, foreign exchange control. यार correct answer है minimum support price जोड़ा कि MSP. Odisha government MSP पेडी पाई केते दोची कमेंट करके जणाबे. At which institution is the new Center of Excellence in Mining and Metallurgy proposed to be established as per the Odisha Budget 2026-27? कौन कहला Center of Excellence in Mining and Metallurgy केउं जगह रे हबा को जाउची तो यार करेक्ट आंसर होची गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केउंझर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केउंझर क्लियर ग्रीनफील्ड यूनिवर्सिटी क्यों जगह सेटअप हम केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक एंड झारसुगुड़ा बहुत गुड़े यूनिवर्सिटी एटसेट्रा ये सब ऑलरेडी आम पढ़ी सारे बजेट रे 2026-23 ओडिशा बजेट रे अंडर सामुका बीच प्रोजेक्ट व्हिच प्लेस विल बी डेवलप्ड एज अ वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर चिलिका पुरी कोणार्क गोपालपुर यार आंसर होची पुरी. The growth of the rural economy depends primarily on the infusion of capital for increasing productivity in the agriculture and non-agriculture sector. The infusion of capital is known as profit, subsidy, credit, tax. Answer will be credit किंबा rural credit भी कोई परिबा. Which of the following best describes structural unemployment? Unemployment caused by population growth and labor force increase, unemployment caused by seasonal changes in agricultural production, unemployment caused by temporary slowdown in industrial activities, unemployment caused by mismatch between skills and job requirements. Answer will be option D. Structural unemployment caused by mismatch between skills and job requirements. Paradip Port
plays a vital role in the development of which industrial corridor in Odisha? Paradip Kenjor Barbil Mineral Belt, Paradip Talcher Industrial Corridor, Eastern Coastal Corridor, Odisha Jharkhand Steel Corridor. तेरा करेक्ट आंसर होची Eastern Coastal Corridor. ठीक अछि आउ गोटे जिनस मन रखिए पेट्रोलियम केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR यार फुल फॉर्म मन रहिला पेट्रोलियम केमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन ए मेजर इंडस्ट्रियल हब कोठी अछि पारादीप रे आश्चर्य हबार नाही Which of the following labor related parameters is not reported in the annual periodic labor force survey in India? Annual periodic labor force survey एथिरे क्यों पैरामीटर नाही जोटा इंडिया पे होची सेतरे क्यों पैरामीटर नाही बोली पचारला अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मंथली वेज ग्रोथ रेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आंसर अब मंथली वेज ग्रोथ रेट भल से सुनंतु लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट the percentage of persons in the labor force either working or seeking available for work in the population ताको labor force participation rate कहा जाउची यार definition kind of in general दिया जाई छेटी the percentage of persons in the labor force either working or seeking or available for work worker population ratio WPR the percentage of employed person in the population unemployment rate the percentage of persons unemployed among the people in the labor force ठीक अछि नाउ क्वेश्चन ने पचारला जे याद्रु कोडा पैरामीटर नुआ बोली आमे जानले मंथली वेज ग्रोथ रेट पैरामीटर नुआ ताले कोन कोन पैरामीटर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जोटा कि ऑप्शन रे अछि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जोटा कि ऑप्शन रे अछि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जोटा कि मैं पढ़िले क्लियर तीनटा जाको मन रहइबो नेक्स्ट Which of the following government scheme is included under SDG Goal 1 No Poverty? किसान क्रेडिट कार्ड पीएम किसान संपदा योजना अटल पेंशन योजना पीएम पोषण अभियान या फिर कोटा एसडीजी गोल 1 को एम करके स्कीम लॉन्च करा जाइतला नो पोवर्टी यार करेक्ट आंसर होची अटल पेंशन योजना आउ कोन सब स्कीम रही एसडीजी गोल 1 सहित अलाइन करिकी जेमिति कि मनरेगा जोटा कि अब नाही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यार फुल फॉर्म मन रखिबे देन प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एनएसएपी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन डे एनआरएलएम पीएमएमवाई हला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सब रिलेट करूची अलाइन करूची एसडीजी गोल 1 सहित क्लियर नेक्स्ट Which government initiative announced in budget 2026-27 aims to strengthen India's position as a global hub for sports equipment manufacturing with an allocation of 500 crore? Starting रे ही क्वेश्चन थिला यार करेक्ट आंसर होची स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव प्रथम या सेकंड क्वेश्चन थिला ठीक अछि क्लियर तो क्वेश्चन केमिति किछि भी आसी पारे तो से हिसाब रे आपण पढिथिबा निहाती दरकार एमिति पढिथिबे से गोटे सेंटेंस को से दी तीन प्रकार भाव रे भी क्वेश्चन पचारि पारे क्लियर जेहेतु ऑनलाइन एग्जाम हो जे आपण माने से परमार एसएससी बहुत जन पिला कहउचंती भलो बुक अछि तांकर मु देखिनी किंतु सुनिलिनी बहुत सेत में रेकमेंड करछि परमार एसएससी तांकर बुक किंबा तरुण गोयल स्टैटिक जिनस जानिबा पई स्टैटिक लास्ट क्वेश्चन अच्छा जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज ओडब्ल्यूएससी सीजीएल पे गोटे डेमो क्वेश्चन देइथिली सेतरे गोटे जिनस मु छाडी देइथिली माने अपडेट नाही नथिला मोर जेमति कि इंडिया रो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू व्हिच डेवलपमेंट अप्रोच तो यार आंसर थिला ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट केतेटा कोर मिशन अछि एनएपीसीसी अंडर 8टा मु कहितले 8टा जेतले लॉन्च हेतला माने 2008 रे जेतले लॉन्च हेतला यार कोर थिला 8टा जकर नाम मेंशन करा जायछि आज ऑफ नाउ जदि हमें देखिबा आ गोटे नुआ ऐड करा जायछि दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ
तो समुदाय केतेटा हला 9टा मिशन केतेटा हला 9टा हेल्थ गोटे नुआ ऐड करा जिछि बुझी होछि तो एटा टिके मार्क करिवे किंबा नोट करिवे वेरी इंपोर्टेंट बाय द वे देखो जो माने क्लोजली फॉलो करछन से माने बे वीडियोटा रे देखिले जानिले जो माने रैंडमली वीडियो देखि पळोछन से माने A city's population increases but a housing, water supply and infrastructure remain the same. This situation represents आंसर कौन हम ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट सिटी रो पॉपुलेशन इंक्रीज होची बट हाउसिंग वाटर सप्लाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन द सेम ताले ताको कोन कहबा ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट ठीक अछि ए थला टोटल 20 क्वेश्चंस एवं जो माने जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज रो से गोटे वीडियो देखिना देखि नेबे वीडियो भल लागितले ही लाइक करिवे शेयर करिवे निजो संग मान को सहित फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करथले सब्सक्राइब करिकि निजरो सपोर्ट निश्चित देबे बेस्ट ऑफ लक